Good morning, friends. So, okay, already time हो गया. I don't know why the people are not joining. How many of you have given the exam? कितना लोग आप mock test दिया है? Anybody has given mock test? Gaurav, Neha, Rajesh, Yogi. How many of you had given the mock test? Any one of you? नहीं नहीं दिया. अच्छा, क्यों नहीं दिया? तैयार नहीं हुआ अभी? Not ready for the exam. Okay, chaliye, right. Last we have seen this problem. There was a small mistake in that, so I have corrected that. And last class, चलिए right. Last class सारे अटेंड किया था. पिछले हफ्ते का क्लास सारे अटेंड किया. हाँ जी यार, कुछ तो बोलो. You're all you're all. I hope you have attended the previous class. Am I right? जवाब तो दीजिए. Nobody is answering. गौरव, आप बताइए. You are not there. Okay. गौरव, आप था? You are there? अच्छा, you are also not in the previous class. Neha? नेहा, आप थी पिछले क्लास पे? नेहा, could you listen me? अच्छा, she is also not answering. जतिन, आप पिछले क्लास पे था? जतिन, पिछले क्लास पे आप थे? Okay, yeah. This was the problem related to problem number. कौन सा था? चलिए, problem number. It was problem number 18. Question number 18 था. And half the question we have done, then we could not complete the problem. The time was over in the last class. I'll tell you which page it is there. It was there in the PDF page number. PDF page number 5. PDF page number 5, question number 18. Okay. All right. Last class. So we have left in between, and we have got kitna C is bringing that we have worked out. With that, we stopped with the last class. The last class we have started with problem number 18.
The problem number 18, the difference was here we have to make the equation. क्यों equation बनाना है? Because one of the insolvent partner is bringing 50 paise of his final due. So what was his final due? That was not known. Other problem they have said इतना पैसा लेके आ रहा है 40 paise in rupees, 50 paise in rupees, and final due इतना है. So something like that was given, but here nothing was given. All the partners are insolvent, and they say C was able to pay 50 paise in a rupee of what was payable on his own account to the partnership. This is what's said. So we have made the provisional accounts to find out how much C is bringing the money. Now we will be going for the main problem. So good problem. Let's go for this. Okay. Realization account. Realization account. क्या क्या प्रिपेयर करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3 पार्टनर्स हैं. Then bank account. Generally, in all partners insolvency, we prepare the deficiency account. In this problem, we have not prepared deficiency account. The reason I have told you in the last class, because they say the realization loss should be after considering what you are paying to creditors. So indirectly they are telling, don't take the liabilities by opening separate accounts and consider like the normal dissolution problem. And we have taken, therefore we have taken the creditors in the realization account. Okay. Who are the partners? Partners are ABC are the partners. As usual, transfer the balances. Transfer the balances by balance brought down. Is capital balances 20,000, B का है 20,000 and C 10,000. Bank balance to balance brought down. $1,000. Okay, right. Now transfer the losses to loss account. Loss is how much? 30,000 is there. Profit sharing ratio 5:3, 4:3:3. 4:3:3 is there. This one 30,000 है. So 12,000, 9,000 and 9,000 loss we have distributed. Loan from A is there. Transfer the loan from A. Also here, loan from A. Transfer to A's account. 10,000. We can take it separately also, nothing wrong in that. Loan from A, 10,000 is over. Transfer the assets to the debit side of realization account. Tools and assets.
क्या क्या होगा? फिक्स्ड एसेट्स 40,000 and debtors 24,000. Stock is 20,000. The total is 84,000. By creditors 40,000. By loan from Mrs. A 15,000. ये इस लोन है, किसका लोन है? ये इस लोन है पार्टनर्स लोन, तो वहां हम उसको सेपरेटली लेना है. इट इज नॉट ए एक्सटर्नल लाइबिलिटी. So, अभी देख लीजिए इसके बाद go for the adjustments. The firm was dissolved. The stock realized 10,000. So buy back. Stock realized 10,000. So stock 10,000. Fixed assets and debtors realized 30,000. Fixed assets and debtors realized 30,000 in all. Okay, right. The private portion of the partner A is under private estate 10,000, private liabilities 15,000. इनका liability private liability ज्यादा है उनका प्राइवेट असेट्स का. मैं तो उनसे उससे पैसा मिलने का कोई संभावना नहीं है, तो उनसे कुछ भी नहीं मिल रहा है. दिस इज व्हाट द मीनिंग. B is private asset 8,000 and private liability 6,000. तो हम प्राइवेट असेट्स को सेल करके 8,000 आएगा, उसमें से 6,000 सेटल करने के बाद बच गया है 2,000. दैट ही विल बी ब्रिंगिंग इनटू द बिजनेस टू B's कैपिटल अकाउंट. He is bringing 2,000 by B's capital account. 2,000 लेके आ रहा है, right? See, the partners share the profit and losses. What is to 3 A, B, C respectively. The loss and realization is to be determined after considering the amount. C was able to bring 50 paise in the rupee what was payable on his own account to the partnership. तो हम इसी को पिछले क्लास पे हम वर्कआउट किया था by making the provisional accounts. तो मिला है हमको he has to bring 5,059 rupees is bringing. So the entry would be to C's capital account 5059. ये तो working note से हमको मिला है. By bank 5059. Okay, तो ये हो गया. Now what they say, I think he said अभी इसको क्लोज कर लीजिए. कितना आ गया? 40,000 आ गया. तो रियलाइजेशन अकाउंट 40,000. अभी इसको क्लोज कर ली. जितना भी कैश है किसको पे करेंगे? वी विल बी पेइंग टू एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. और कोई एक्सपेंसेस तो नहीं. सो अभी देख लीजिए, यहाँ हमारा प्रोविजनल कैश अकाउंट था, दैट इज प्रोविजनल बैंक अकाउंट है. तो यही था. सो टोटल हाउ मच इज देयर? यहाँ आ गया है 48,059. 48,059 is there by realization account, creditors plus Mrs. C's loan. ये दोनों का पे करना है. जितना भी पैसा बच गया वो दे देंगे. Mrs. C's loan. So 48,059 rupees we are paying. जितना भी cash balance is there to bank. 48,059. This is creditors plus Mrs. C's loan. Mrs.
एस लोन। ठीक है, ये अभी क्लोज कर लीजिए, तो यू विल बी गेटिंग हाउ मच इज द लॉस। ओके, सो ये हो गया है आपका 84,000, 84,000 प्लस 48,059, ये टोटल आ गया है 132,059। दैट्स इट टोटल। तो ये हो गया 37,059, पहले था 32,000, कितना था, 32,000 प्लस एक्स था, एक्स कितना है 5059 था, so 37,059, that is the balance you are getting clearly here, 37,059, total is 132,059, by loss transferred to capital account A, B and C will be transferring to them। तो इनको आ गया है 14,824, 111,711 to realization account। What is this? This is loss, 1118, 11,118, 11,117 एंड ये के लिए आ गया 14,824। अभी क्लोज कर लीजिए इनको। Here it is coming 30,000, 30,000। See here is credit balance एवढा कितना है, credit total, credit side total is 30,000, debit side total is 26,824, 26,824, so 30,000 minus 26,824, the balance is coming 3,176। ठीक है, एंड बी का कितना है, बी का टोटल है 22,000, क्रेडिट से टोटल इज 22,000, 22,000 माइनस 2117, ये हो गया 188। सो क्रेडिट बैलेंस, credit balance 22,000, debit balance, debit balance is 20,117, so the difference is 1883। ठीक है, सो सी का बैलेंस कितना है, सी क्रेडिट साइड बैलेंस इज 15059 and debit side balance is how much, 2118। so the difference, how much difference is 15,059 minus 2118, so here 5059 ये डेबिट बैलेंस आ रहा है। तो क्या एंट्री है, भी इसको टिक करना है, एंट्री विल बी
C's deficiency to be borne by A and B. So entry will be A's capital account debit, B's capital account debit to C's capital account. 5059 इनका कितना है 3176 and 1883. 3176 and 1883. So entry क्या होगा? A's capital account debit, B's capital account debit to C's capital account deficiency. 3176 and 1883. यहाँ आ जाएगा by A's capital account by B's capital account. इसी का deficiency है. Deficiency of C borne by A and B. So यहाँ है 3176 and 1883. ये कैसे आया करके मैं नीचे आपको करके दिखाया हूँ. 20,180. So this is the way we have to find out calculation of C's deficiency to be borne by A and B. Okay, right. So this is the way we have to do it. Any doubt अगर किसी का है बताइए. 48059. अभी देख लीजिए. This is the way we have to do it. One of the important problem बहुत बार पूछा गया है एग्जामिनेशन पे. This type of problem हमारा स्टडी मटेरियल में भी ऐसे प्रॉब्लम्स है और एग्जाम्स में भी आया है. Scanner, if you happen to see the scanner, you can get to know how many times this has been asked. Very often this type of questions are asked in the examination. बहुत बार आ चुका है. Okay. So any doubt in this questions you can ask me. We have started in the previous class this problem. टाइम नहीं था तो हम वर्कआउट करके छोड़ दिया था. ये प्रॉब्लम क्या है? प्लीज once again I'll explain this problem since this problem is an important problem. PDF पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 18 है. इसमें दिया है ABC are the partners and the balance sheet on the date of dissolution given like this. Creditors, loan from Mrs. C, loan from A, capital accounts, fixed assets, data, stock, cash at bank, and loss. Total. The firm was dissolved, stock realized 10,000, fixed assets, data realized, these are in all. The private portion of the partners are as under. A is private estate 10,000, private liability is 15,000. उनसे कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि private liability is more than the private assets. तो उनसे कुछ भी मिलने का उम्मीद नहीं है. B's private asset is 8,000 and private liability is 6,000. So he can bring 2,000 into the business. So 2,000 वो लेके आ रहा है. The entry will be bank account debit to B's capital account. C was able to pay 50 paise in a rupee what was payable on his own account to the partnership. ये बता रहा है C उनका जितना भी बैलेंस आएगा उसका 50% लेके आ रहा है, बाकी वो लेके नहीं आ रहा है. तो क्या हो जाता है? सारे इंसॉल्वेंट करके बोल रहा है. ए का प्राइवेट एसेट दिया, प्राइवेट लायबिलिटी ज्यादा है, वो भी कंगाल हो गया. दैट इज इंडिकेशन. B is bringing only 2,000 by selling his private assets. तो ये भी डिक्लेयर करता है he has also become insolvent. And C was unable to pay. So that also shows C is a
C is an insolvent. तो सारे कंगाल हो गया. All partners insolvency. What is the difference between the previous problem what we have done and this problem? यहाँ ये बताया है previous problem पे सारे कितना पार्टनर्स लेके आ सकता है पैसा, लेकिन यहाँ सी के लिए वो नहीं दिया है. सी का ये बता रहा है तो सी जितना देना है उसमें 50% लेके आता है, बाकी ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग. तो वी हैव मेड he was able to bring only 50 paise in the rupee of what was payable on his own account to the partnership. The partners share the profits and losses in the ratio 4:3:3. A, B, and C respectively. The loss on realization is to be determined after considering amount finally paid to the creditors. तो ये लाइन क्या बताता है? Don't open deficiency account. जनरली सारे all partners insolvency पे हम कौन सा अकाउंट ओपन करता है? You open the realization account, capital account, bank account, and external liabilities, creditors account, liabilities account, and deficiency account open करता है. Liabilities we don't transfer to the realization account. तो जितना पैसा बच जाता है वो तो लाइबिलिटीज को हम बांट लेता है. जितना बैलेंस आता है लाइबिलिटीज अकाउंट दैट इज ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी अकाउंट. रियलाइजेशन लॉस को क्लोज करके हम ट्रांसफर करता है कैपिटल अकाउंट. जितना कैपिटल अकाउंट पे बैलेंस आता है दैट आल्सो वी ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी अकाउंट. लेकिन इस प्रॉब्लम पे वेरी क्लियरली दे गिवन डोंट मेक डेफिशिएंसी अकाउंट. कैसे बता रहा है? हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी शुड नॉट ओपन द डेफिशिएंसी अकाउंट. क्या है? The loss on realization is to be determined after considering the amount finally paid to the creditors. तो उन्होंने ये बता रहा है क्रेडिटर्स को भी आप रियलाइजेशन अकाउंट पे लीजिए. क्रेडिटर्स मतलब all the external liabilities. So creditors and loan from Mrs. A सारे हम रियलाइजेशन अकाउंट पे लिए. फिर बाद में हम फाइंड आउट किया है क्या है लॉस. ठीक है, आफ्टर पेमेंट टू क्रेडिटर्स whatever the loss is that we have transferred to capital account. जितना capital account पे deficiency आया है that we have adjusted with the solvent. मतलब जिस पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस है उनके साथ जिस पार्टनर का डेबिट बैलेंस है उसको एडजस्ट किया था. सी का डेफिशिएंसी था 5059. So that 5059 was borne by A and B in the at 3176 and 1885. So these are all things. The last class we have made a provisional account to find out how much C has to bring. So we have made, and whatever the cash brought in by C we have considered as X. The total has become, total of the bank account become 43,000 X, and this amount we have paid the creditors and the loan 43,000 X. Find out किया था कितना लॉस है करके उसको C का अकाउंट पे ट्रांसफर किया था. C का टोटल बैलेंस आया था 8,600 plus 3x upon 10. This is the total due from C. Final due from C is 8600 plus 3x by 10. तो हम फिर इक्वेशन बना के फाइंड आउट किया है कितना वो लेके आ रहा है. So they have given 50% of this he is bringing. So x is equal to a करके फिर फाइंड आउट किया. C, how much C is bringing? C brought 5059. Now it has become any other problem, like any other problem, normal problem हो गया. We have done it and we got this. जो लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया है डेफिनेटली उनको तो थोड़ा दिक्कत होगा इसको समझने में. जाके देख लीजिए. इन केस इफ यू आर गेटिंग एनी डाउट यू कैन कॉल मी एंड आस्क, और नेक्स्ट क्लास पे आप क्लैरिफाई कर सकते हैं. जो लास्ट क्लास अटेंड किया है उनके लिए कोई प्रॉब्लम इन दिस? एनी अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम? एनी वन ऑफ यू? Kirti, any doubt? All clear. Okay. So with this, the normal insolvency, normal realization is over. Realization pay, normal realization we have seen. Then insolvency we have seen. Insolvency में दो टाइप है. एक है all partners insolvency, दूसरा है some of the partners insolvency. सारे पार्टनर नहीं है, कोई पार्टनर among the partner they have become insolvent. उसमें तो गाना बस मरे रूल हम अप्लाई करते थे.
वो किया था. Then all partners insolvency we have seen. Different type of problem we have seen. We have discussed section 48 and all. Okay, with this this part is over. Now in dissolution left out is two areas. One is amalgamation, sale to company. This is one area, and another area is piecemeal distribution. So let's see whatever I can do it. Let's see here. So we will be doing now piecemeal distribution. I'll conduct a separate class because class तो हमारे पास बहुत कम है and number of days are also very less. I will conduct my separate classes for the accounting standard. लेकिन कम से कम उसमें तो 5-6 लोग होना चाहिए. कम से कम 5-6 लोग होना चाहिए. तभी मैं आपको प्राइवेट क्लास में दूंगा. नहीं तो there is no meaning of giving private classes. So additional classes, I'm not going to charge anything for this, and it is from my side I'll be giving the class for accounting standard, क्योंकि accounting standard का weightage है 20 मार्क का. So you must do the accounting standard. जो पेपर अटेम्प्ट किया है मॉक टेस्ट पे, सबको मालूम है कितना इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है करके, एंड इट विल बी वेरी वेरी सिंपल अगर आप एक बार किया है तो. So I will be conducting the class for the accounting standards this week. Subject to कम से कम 6-7 लोग होना चाहिए, तभी मैं कंडक्ट करूंगा, otherwise I will not conduct the class. So whoever wants to do it, attend the classes. So additional classes आप मुझे बता दीजिए. I will inform you. I'll give you the ID and password. You can join with me. ठीक है? Right? Okay, friends. So who is going to take the in charge for this? Any one of you. Any one of you. Alan, you can take the in charge, or Kirti, or Shilpika. Any one of you can take us in charge and tell me, ask the people and tell me how many of you are going to join, and I'll give you the date. That date we can start our accounting standards. Accounting standard 20 marks, very easy to score. Okay. Right now, the next area I'm going to do the piecemeal distribution. Okay. Piecemeal distribution. Yes. Who is going to take the in charge? Who is going to coordinate? वो तो मुझे बताइए. Pooja and another who said. So here keep Shilpika and Kirti and Pooja. Only 3 people have said me, yes sir, we are joining. But I told you that at least 6 to 7 people should be there. Then I will connect the classes. Just you can send me the request. Otherwise, if 6-7 people are not there, just you send me the request. When I connect for other groups, I can ask you to join it. Okay, right? If 6-7 people are not joining, so one of you have to be the coordinator, and you have to tell me that how many people are joining, and as early as possible, I'll be giving you the date so you can join. Okay, right? क्या है piecemeal distribution? What is piecemeal distribution? Alan, what is piecemeal distribution? Alan?
Are you listening me? What is piecemeal distribution? Please tell me. Say yes or no if you. Oh, so you don't know. Okay, right. Anybody else? Kitty, what is piecemeal distribution? Kitty, what is piecemeal distribution? Don't know. Acha. Right. See here in this problem, how much we have sold our stock, for how much we have sold, हम sale किया है stock 10,000 we got, fixed assets को sell किया and debtors को realize किया है, total हमको 40,000 मिला है. It is just in 2-3 minutes we have done this. लेकिन जो assets को sell करना है, disposing the asset इतना easy नहीं है. It is not at all easy. It takes a lot of time. It might take 3 years, 4 years. कम से कम 1 साल तो लगता है. So if you want to sell your land, you have to wait for the good party to pay you back. नहीं तो थोड़ा advance pay करेगा, फिर बाद में तो you never get the money and they will take the land. You will be running around them. So that type of things will be happening. So all the assets are not sold immediately or on the same date. It will be sold in small amounts. In first day, you may say, take the stock. Stock 20% is sold one day, 70% is sold another day, and balance 10% is sold some other day. Something like that. Everything is not sold on the same date. It will take a lot of time. जितना पैसा आता है, that money is distributed as and when it is realized. That money is distributed to the creditors. So very strictly we follow here the section 48. First we provide for our expenses, provide for section 4. The last class I have, last class I think so. I have given you the settlement priority or order, priority order. सबसे पहले हम provide for dissolution expenses. Then second is settle secured creditors. Then third is settle unsecured creditors. Then partners loan pay it. ये पे करने के बाद कोई पैसा बच गया है, then you distribute to the partners. So this is what we have seen in the section 48, starting of the dissolution. This we have discussed. So the same thing, we will be getting the money not immediately. In installment wise we will be getting. Today stock is sold for 1 lakh. Whatever the 1 lakh is there, you distribute all the people. Then again you get another day. Today you have got 50,000. Distribute that 50,000. So as and when you realize, whatever the money you have realized, that money is distributed to the distributed according to section 48 of Indian Partnership Act 1932. So that practically how the dissolution is done. That is what we are going to do in piecemeal distribution. So piecemeal distribution is distribution of disposal amount to the various creditors, loans, partner, and the capital. Okay. So just a minute, just a second. Okay, friends. So how we have to do it? Let's see here. In the piecemeal distribution, two methods are there. Okay. I'm speaking in Hindi as well as English. क्योंकि पूरा इंडिया से लोग यहाँ अटेंड कर रहा है, तो हिंदी as well as English I will be talking. So yes, if I know the regional language, I can even speak in that, give the lecture in that. But I know which part of India you belong to, so I'm using Hindi and English. Okay, Umeshji, I'll keep it in mind.
तो हिंदी में भी मैं बताता हूँ, ठीक है। जितना भी पैसा आपको सेल करके आ जाता है, डिस्पोज करके पैसा आता है, एसेट को डिस्पोज करके उसको हम इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूट करता है सारे हमारा लायबिलिटीज को। तो वो ऑर्डर तो पहले हम डिस्कस कर चुका है, सेक्शन 48 व्हाट इट सेज, प्रोवाइड फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस के लिए सबसे पहले जितना भी पैसा है उसमें से निकाल के सेपरेटली यू कीप द मनी फॉर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड इज प्रोवाइड सेटल द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उनको पैसा पहले दे दीजिए। देन सेटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स रेटेबली, उनका जो आउटस्टैंडिंग प्रोपोर्शन है उस पर हम डिस्ट्रीब्यूट करता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। ये सारे क्रेडिटर्स सेटल होने के बाद when all the creditors are settled, then pay to the partners loan, partners loan को पहले पे करना है। then still if you are left out with the money, then it will be given to the partners। एंड अगर पूरा पार्टनर का पैसा नहीं दे पाया, उनका जितना कैपिटल बैलेंस है वो नहीं दे पा रहा है, then that is the realization loss। So this is what in the piecemeal distribution we will be doing। piecemeal distribution पे दो मेथड है। The first one is absolute surplus method, this is one, also known as this is proportionate relative relative capital method है। The second method is maximum possible loss method। So second method, maximum possible loss। So the second method is maximum possible loss method। तो ये दोनों मेथड पे क्वेश्चन आ सकता है, वेरी सिंपल लेकिन थोड़ा बड़ा होता है, लेंथी होता है। इट इज वेरी लेंथी बट इट्स अ वेरी सिंपल वन दोनों। when we have to apply this absolute surplus method, कब हम absolute surplus method को यूज कर सकता है, तो ये तो मालूम होना चाहिए कब हम maximum possible loss method को यूज करना है, हम कब हम absolute surplus method को यूज करना है, ये तो हमको मालूम होना चाहिए। ये in case of insolvency, then maximum possible loss method can only be applied। In case of insolvency, maximum possible loss method can only be applied। No insolvency, absolute surplus method and maximum possible loss method दोनों कर सकता है। तो मतलब ये है maximum possible loss, you call it as MPL, maximum possible loss method, whether insolvency या there is no insolvency, कोई भी situations you can use the maximum possible loss method। लेकिन absolute surplus method you can use only when there is no insolvency, you can use the absolute surplus method। ठीक है, समझ में आ गया उमेश जी, कब हम absolute surplus method को यूज कर सकता है? absolute surplus method हम अप्लाई कर सकता है अगर कोई insolvency नहीं है। when there is no insolvency, we can we can apply absolute surplus method। इंसॉल्वेंसी टाइम पे एब्सोल्यूट सरप्लस मेथड यूज नहीं कर सकता है, बट in case any case we can use maximum possible loss method, whether there is insolvency or there is no insolvency, still we can use the maximum possible loss method। So now first let us understand how to do the absolute surplus method।
So order of settlement, priority of settlement, section 48 क्या बताता है? Provide for expenses, settle secured creditors. तीसरा point, settle unsecured creditors, and fourth point, settle the partner's loan. ये सारे settle होने के बाद, in case if you are left out with money, then give to partners. ये बताता है. So here in the absolute surplus, while giving the partners also, कोई पार्टनर ज्यादा इन्वेस्ट किया है तो उस इन्वेस्टमेंट को, सरप्लस को पहले, सबसे पहले सेटल कर लीजिए, देन यू पे द अदर्स. आई विल से हियर, आई विल एक्सप्लेन यू हियर. सपोज एबीसी 3 पार्टनर्स है, इनका कैपिटल 1:1:1. इनका कैपिटल ए बी का कैपिटल 3 lakhs, 5 lakhs, 3 lakhs are equal partners, and but the capitals are different. तो अभी you can see it is very apparent, देखने से आपको पता चल जाएगा सारे पार्टनर्स इक्वल पार्टनर्स है. ए और सी इन्वेस्टमेंट 1 लाख, लेकिन बी ने कितना इन्वेस्ट किया है? 5 लाख इन्वेस्ट किया है. सबसे पहले कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया है? 2 लाख ज्यादा इन्वेस्ट किया है. वो 2 लाख का पे कर लीजिए फर्स्ट. अगर आपका पास 4 लाख है, पहले ये 2 लाख सरप्लस को पे कर दीजिए, सरप्लस ऑफ बी 2 लाख आप पे कर दीजिए. अभी कितना हो गया? 3 लाख हो गया इनका भी. ये पे करने के बाद, ये 2 लाख पे करने के बाद, ये 4 लाख से हम 2 लाख पे कर लिया बी को, बच गया है 2 लाख. 2 lakhs is left out. Now you distribute this 2 lakhs in the profit sharing ratio 1:1:1. So this is what we supposed to know. This is what we'll be doing in piecemeal distribution. सबसे पहले जितना सरप्लस है उसको पे कर दीजिए, then you pay the partners the rest of the money. So how to identify the surplus? So the capital should be in profit sharing ratio. Anything more than the profit sharing ratio should be paid first. Okay. So surplus जितना है वो pay करना है. Let's see here. Problem. I'll take the problem, proper problem, and मैं आपको explain करूँगा how we have to apply this. Okay. So example. Capital balance, credit balance, A 5 lakhs, B 7 lakhs, C 8 lakhs. General reserve rupees 3 lakhs. A is to B is to C. 5:3:2. Find out absolute surplus of capital of ABC. तो क्या करना है इसमें? हम सबसे पहले, in case slowly to make you to understand. So if my language you are not getting, or if you are not getting what I am doing, please kindly ask me. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछिए, stop me and ask. And जब आप पूछना है कुछ, अनम्यूट करके आप बात कर लीजिए, राइट? अगर पूछना है तो अनम्यूट करके बात कर लीजिए, राइट? So A, B, C are the partners. Balance brought down, कितना है इनका? 5 lakhs, 7 lakh,
8 lakh. This is the, what is the profit sharing ratio? 5:3:2 is the profit sharing ratio. Okay, right. Now add जनरल रिजर्व. अगर कोई लॉस होगा तो उसको माइनस करेंगे. ठीक है, कौन सा रेशियो पे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 5:3:2. 3 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो 1,50,000, 1,50,000. इनका टोटल कैपिटल अभी हो गया है 6,50,000, 8,50,000. Anybody is having the doubt till now, till here? किसी का कोई डाउट? उमेश जी समझ में आ रहा है? उमेश भाई, अच्छा ठीक है, right. So I assume that everybody is getting right. Now let us go for this. अभी तो इनका कैपिटल देख लीजिए, 6,50,000, 8 lakhs and 8,50,000. It is not as per profit sharing ratio. आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है, लेकिन कैपिटल है उस रेशियो पे नहीं है. चलिए, तो हम कौन ज्यादा पे किया है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. इसके लिए क्या करना है? वी विल बी फाइंडिंग आउट टोटल कैपिटल. टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? सो दिस इज द बैलेंस. टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म based on A's capital. Sir, excuse me, sir. हाँ Sir, जी, we distributed general reserve in profit sharing ratio, right? हाँ जी, yes. So one for B and C 90 and 60, right? Right. It is not 3:2:1. It is 5:3:2. Okay, 90,000, 60,000. Thank you, friend. Thank you, all. So this is 7,90,000 and 8,60,000. Thank you, Alan. Right. So based on A's capital कितना है? 6,50,000. इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5/10. अगर ये 5/10 है तो टोटल कैपिटल कितना होगा? तो सी हियर 5/10 x is कितना है? 6,50,000. x is the total capital. तो x कितना होगा? 6,50,000 into 10/5. यही करता है ना? So we convert the capital into total capital based on the partners. So in this case, into 10/5. So in this case, it becomes 13 lakhs. Okay. Based on B's capital, तो क्या होगा? is 7,90,000 into 10/3. 7,90,000 divided by 3 into 10 is 26,33,333. And based on C's capital, how much is this? 8,60,000 into 10/2. 860,000. So this is 43 lakhs. Any doubt? I have converted the capital into total capital. तो फिर बाद में क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट लीस्ट अमंग दिस. ये तीनों पे जो कम होता है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट. सो लीस्ट अमंग दिस इज 13 lakhs. We have to convert into total capital, the capital balance, convert it into total capital. उसमें जो लीस्ट है उसको फाइंड आउट कर लीजिए. तो यू हैव 13 lakh, 26 lakhs, 43 lakhs. अमंग दिस लीस्ट कौन सा है?
13 lakhs, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट दिस टू पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो कितना हो जाएगा 6,50,000. So 1,30,000 to 3,90,000. 130 into 2, 2,60,000. So इसको माइनस कर लीजिए इसमें से. This is supposed to be the capital, but people have invested, partners has invested more than that. So subtract. So this is the surplus. So how much is B surplus? 7,90,000 minus 3,90,000. So his surplus is 4 lakhs. How much is the surplus of C? 8,60,000 minus 2,60,000. His surplus is 6 lakhs. Till here, any doubt? Till here, any doubt? Any one of you, any doubt? Okay. Now see, between B and C also there is a surplus. B has invested 4 lakhs more and C has invested 6 lakhs more. So between B and C, B ज़्यादा C ने की है, तो we'll find out what is the absolute surplus. Overall मतलब सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्ट किया है, कितना इन्वेस्ट किया है. So here B is to C क्या रेशियो है? B is to C 3:2. So total capital based on capital of B 4 lakhs into 5/2, and based on C's capital क्या आएगा 6 lakhs into 5/2. Okay, 4 lakhs divided by 3 into 5. Okay, capital आ गया है 6,66,667. Okay, based on C क्या आएगा 6 lakhs into 5 divided by 2. ये आ गया 15 lakhs. So whose capital is more? Whose capital is lesser here? B's capital is lesser. So we will be considering B's capital as the base and we will be distributing that. This we distribute in the ratio 3:2. So E के लिए 4 lakhs आ जाएगा, and for B balance आ जाएगा 667 minus 2,66,667. So you get the absolute surplus. So you get here absolute surplus. How much is absolute surplus? Minus 6 lakhs. 3,33,333. This is the absolute surplus. Are you getting this? Are you getting this now? Are you getting this now? So, सबसे पहले we will be paying this 3,33,333 to C. ये पूरा देने के बाद then the left out money will be given the surplus 4 lakhs and 2,66,000. Total surplus is 10 lakhs. 4 lakhs by B and 6 lakhs by C. The total surplus 10 lakh है.
10 लाख में भी सी ने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है 3,33,333। तो सबसे पहले आप ये 3,33,333 को पे कर लीजिए। बाकी सरप्लस आपको बच गया है 6,66,667। तो वो दोनों के बीच में 4 लाख और 2,66,667 करके हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये करने के बाद उनका कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे आ जाएगा, दैट इज 6,50,000, 3,90,000, 2,60,000 आ जाएगा। Then you can start distributing in the profit sharing ratio. Okay, once again I'm telling you, we have to find out the total capital, then convert the total capital of each partner into convert the capital of each partner into total capital of the firm. So we have got this in the first stage. 13 lakhs is the least among this. So distribute to all partners in the profit sharing ratio. Now you will be, if you subtract from the balance of the capital, you get what is the surplus, overall surplus. 4 lakhs surplus by B and surplus contributed by C is 6 lakhs. Among this also there is a absolute surplus. सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है कौन किया है? सी ने किया है. So how we have to same procedure we do convert this balance into total capital between the other two partners. So we got B's capital is least among this. So we have distributed this in the profit sharing ratio 4 lakhs and 266,700 minus it. You get how much C has paid more. So absolute surplus we have got it. And first you have to pay this absolute surplus. Then the left out surplus between B and C. When you complete this 10 lakh surplus, then the profit sharing, the capital will be in the profit sharing ratio. You can start paying them in the profit sharing ratio. So this is what we have to do it in this. Okay. कोई doubt किसी का? Anybody has any doubt, please let me know. Anybody is having any doubt? Kliti, it is clear or you have doubt? Clear. सबके लिए clear है? Everybody is got? Okay, right. I'm giving you a problem. आप अभी करेंगे, ठीक है? Right. Find out. Find out. Absolute surplus. Is to B is to C is 2 is to 1. The capital A 5 lakhs, B 7 lakhs, and C 2 lakhs. General reserve rupees 8 lakhs. Profit and loss account debit balance rupees 2 lakhs. तो इससे आप फाइंड आउट कर लीजिए जल्दी. आई एम गिविंग यू 5 minutes. नाउ द टाइम इज 1:04 है. ठीक है, कैसे आप लोग करता है लेट्स सी. जल्दी कर लीजिए. लेट्स सी हु इज डूइंग फर्स्ट. जल्दी कर लीजिए.
कौन किया है? Who has done it? Any one of you? उमेश जी बताइए कितना है अमाउंट एब्सोल्यूट सरप्लस? एब्सोल्यूट सरप्लस कितना है और किसका है उमेश जी? बोलो भाई कुछ। कैपिटल बैलेंस 5 lakhs. 7 lakhs. 2 lakhs. Add जनरल रिजर्व कौन सा रेशियो है? 2:2:1. जनरल रिजर्व 8 लाख है तो 3,20,000 नहीं, हाँ 320,000 3,20,000 1,60,000 लेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस का मतलब ये है यस यस कीर्ति यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग. Sir, B has absolute surplus of 2 lakh. Okay, who is this? Alan. Okay, Alan. Yes, anybody else got it? So P&L account debit balance, the meaning is loss. This is loss. Loss will be subtracted. How much is the loss? 2 lakhs is the loss. So this will be 80,000, 80,000 and 40,000. This also we have distributed in the profit sharing ratio. Okay. Now, so total कितना हो गया ये? 8,20,000 minus 80,000. 7,40,000 and 10,20,000 minus 80,000. 940,000 and 360 minus 40, 3,20,000. यहां तक तो सबका तो मिल गया होगा, है ना? Right now, let us see here. कैसे? So, total capital of the firm based on A's capital क्या होगा? 740,000. ये है 2/5 capital. Okay, good. 2/5 capital. Therefore, complete capital कितना होगा? 5/2 होगा.
So 740,000 divided by 2 into 5. तो ये हो गया 18,50,000. And B का कैपिटल कितना होगा? B will be 9,40,000 into 5 by 2. 940,000 divided by 2 into 5. 23,50,000. And based on C's capital, 3,20,000 into 5 by 1. So 320,000. So this is 16 lakhs. Okay. So इसमें least कौन सा है? इसमें least है, सबसे least ये है. So this we will be distributing in the ratio. कौन सा ratio पे? In the profit sharing ratio. इनका profit sharing ratio 2:2:1. इनको आ जाएगा 320,000 and 640,000, 6,40,000. इसको माइनस कर लीजिए, आपको सरप्लस मिल जाएगा. इनको हो गया है 1 लाख, 3 lakhs, and this is nil fund. A is to B, 2:2 or 1:1. Total capital based on A will be 1 lakh into 2 by 1, 2 lakhs. And based on B, 3 lakh into 2 by 1, 6 lakhs. So कौन सा है इसमें, कौन सा है इसमें लीस्ट? तो लीस्ट इसमें है 2 लाख. इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1. So 1 lakh, 1 lakh. Now you'll be getting absolute surplus. Get the absolute surplus. The 2 lakhs is the absolute surplus. Very good. And किस किसका ये सही आंसर आया? सबको मिला ये आंसर? सबको मिला ये आंसर? ओके जी. एलन और शिल्पिका गुड, उमेश गुड. Very nice, very nice. Abhi, we will go for the problem. Go for problem number. Problem number 33. Problem number 33. क्या है PDF page? What is the PDF page number? Problem number 33. Tell me the PDF page number. So ये होगा PDF page number बताता हूँ. 13. Okay. Right. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yes. ये है. Yes. Page number 12 and 13. 13 and 14. Yeah. PDF page number 13 and 14. PDF page number
13 and 14. Problem number 33. Okay. The firm LMS was dissolved on 31st March, at which date is the balance sheet stood as follows. LMN का दे दिया है, right? Capital balance sheet दिया है. Partners share the profit and losses equally. The firm of chartered accountant is retained to realize the assets and distribute cash after discharge of liabilities. The fees which are to include all expenses is fixed at rupees 1 lakh. No loss is expected on realization since fixed assets include valuable land and building. The realizations are this. The chartered accountants firm decided to pay up the partners in their higher relative capital method. Prepare the statement showing distribution of cash. तो ये है क्या है? We have written here absolute surplus method, proportionate relative capital method, higher surplus, higher relative surplus method, higher. तो सारे absolute surplus method में higher relative surplus method. Okay, right. So first, सबसे पहले we have to make the statement of computation of absolute surplus. So this is सबसे पहले, this is what we have to do it. Okay. Yes, योगी जी, क्या है? कुछ इन पीडीएफ क्या पूछा है आपने? क्या बोला है? कुछ डाउट, कुछ कंफ्यूजन? अच्छा, कहाँ मिलेगा? पीडीएफ में पेज नंबर? ओके 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 ओके, राइट राइट राइट. Okay. So particulars, partners capital. Who are the partners? LM. Yes. From the balance sheet. From the balance sheet. Transfer the balances. So balance, capital balance. So there is no surplus, there is no surplus, and there is no losses also. There is no accumulated profits, there is no accumulated losses. So add accumulated profits, वो भी कुछ भी नहीं, minus accumulated losses, that is also not there. So your capital balance is 15 lakhs, 10 lakhs, and 5 lakhs. Okay, right.
total capital of the firm based on the capital क्या है? What is the profit sharing ratio? So what is the profit sharing ratio? Profit sharing ratio is not given. Very clearly given. Partner share profits and losses equally they have given. So 1:1. The very first statement they have given. चलिए right. Based on L's capital. Capital of L. तो ये कितना होगा 15 लाख into 3/1. So 45 lakhs. Based on M's capital 10 lakhs into 3/1. So this is 30 lakhs LMS 5 lakhs into 3/1 15 lakhs. तो सबसे लीस्ट इसमें है इसका कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट इन रेशियो 1:1:1. So 5 lakhs 5 lakhs 5 lakhs. Okay, so you get here surplus 10 lakhs and 5 lakhs. Then what is the ratio between A and B? A and B is, sorry, there is 1:1. Total capital L का बेस पे करने से 10 lakhs into 2/1 20 lakhs based on M's. 5 lakhs into 2/1 10 lakhs. So in the ratio 1:1, distribute this. So here 5 lakhs, 5 lakhs. तो ये हो गया है आपका एब्सोल्यूट सरप्लस. So सबसे पहले we have to give to L 5 lakhs. Then जितना भी पैसा है, then we have to pay to L and M 5 lakhs, 5 lakhs. ये पे करने के बाद their capital becomes in the profit sharing ratio. You can start distributing them. You can start distributing them in the profit sharing ratio. Right. Now, please kindly close your pen and watch. Now, I am going to make statement of distribution. Close your pen and watch. ठीक है. First problem के लिए आप you have to watch. फिर बाद में ये तो आ जाएगा, ग्रुप में आ जाएगा. It won't be a problem. Second problem you can do along with me. ठीक है. अभी आप please close your pen. समझ लीजिए. Right. So here statement of distribution. तो हम क्या करेंगे इसमें? So here we have to make
पार्टनर्स 3 पार्टनर्स हैं. So if 3 partners are there, then we have else loan. Then we have creditors, and we do have bank loan. The liability side में जो भी है उसका अलग अलग पे कर लीजिए. Particulars. Remember section 48, and which one we have to सबसे पहले we have to settle secured loan, isn't it? So first will be the secured loan will be coming. So here secured loan is what? Bank loan, always it will be secured. So bank loan सबसे पहले ले लीजिए. So this is bank loan. Then second is creditor. Then else loan. Then capital of the partners. L, M, and S. Okay. प्लीज काइंडली वॉच. बाद में कर लीजिए, कॉपी कर सकता है, अभी लीजिए. ठीक है. राइट. नाउ बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना है? बैंक लोन है 5 लाख, 5 lakhs. Then creditors 2 lakhs. Partners loan, else loan 10 lakhs. Else loan 10 lakhs. Then you have 15 lakhs. 10 lakhs and 5 lakhs. Okay, this is over. जितना भी कैश है उसको सबसे पहले हम करेंगे बैलेंस ऑफ कैश. कैश बैलेंस कितना है आपके पास? कैश बैलेंस 2 लाख है. सबसे पहले किसको देना है? सेक्शन 48 से प्रोवाइड फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. सो रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है? रियलाइजेशन एक्सपेंस प्रॉब्लम पे दिया है. The fees which are include all expenses is fixed at rupees 1 lakh. तो ये 1 lakh माइनस कर लीजिए. Balance 1 lakh. So to whom we can pay this? So we have provided for the expenses. The second is settle secured loan. Secured loan यहाँ है, बैंक लोन है. So बैंक लोन को पे करेंगे. Pay for बैंक लोन. जितना पैसा है वो हम पे कर लिए 1 लाख. अभी बैलेंस ब्रॉट डाउन ये होगा 4 लाख. बैंक बैलेंस, बैंक लोन बाकी है. बाकी सारे कुछ भी नहीं, बस बाकी सारे पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है. सो ये फर्स्ट रियलाइजेशन अभी जाएगी. जितना कैश हाथ पे था उसको तो हम दे दिया है. वी हैव प्रोवाइडेड फॉर एक्सपेंसेस. फिर हम बैंक लोन के लिए दे दिया. बच गया है हमारे पास, कुछ भी नहीं बचा है. नाउ गो फॉर द फर्स्ट रियलाइजेशन. फर्स्ट रियलाइजेशन कितना दिया है? रियलाइजेशन 5 लाख. सो
First realization rupees 5 lakhs. And I already told you first we have to pay for the secured loan. Secured loan अभी बाकी हम देना है 4 लाख. Then give this 4 lakhs for the secured loan. So here paid for bank loan 4 lakhs. 4 lakhs यहाँ पे कर लीजिए. कितना बच गया है अभी? Balance you have 1 lakh. So all the secured loans are completed because bank loan was there earlier 1 lakh pay kiya hai. Now we have paid 4 lakhs. Still we have 1 lakh with us. So paid to the unsecured creditors. Here only secured creditors. एक ही creditors only one is that 2 lakhs. Pay them. So paid to creditors. Paid to creditors 1 lakh. तो 1 lakh यहाँ पे कर लीजिए. कितना बच गया अभी? Balance. यहाँ तो 1 lakh is left out. So first realization is over. Now we are going for the second realization. Realization. Amount realized कितना है? How much is the amount realized? 15 lakhs. So सबसे पहले to whom we have to pay? We have to pay to the creditors, unsecured creditors. Pay to creditors. कितना बाकी है? 1 लाख बाकी है. So 1 lakh we have paid. Balance 14 lakhs. तो हम बैंक लोन भी दे दिया, creditors भी दे दिया. We have provided for the expenses also. Now we have to pay partners loan. Partners loan, else loan is the 10 lakh ka. So we will be paying 10 lakhs for else loan. Okay, right. Pay to else loan. else loan कितना है? 10 लाख है. तो 10 लाख पे कर लीजिए एल को. एल का है यार. हम ये पे कर लिया. तो अभी कितना बच गया है हमारे पास? हमारे पास बच गया है अभी. Balance left out is 4 lakhs left out. This 4 lakhs we will be distributing to the partners now. We have paid our provided first 48 में first क्या है? Provide for expenses. Yes, we have provided 1 lakh for expenses. Settle secured creditors. Yes, bank loan we have settled. Then settle unsecured creditors. वो भी settle हो गया है. Now whatever is left out, we have to start giving to our partner. जब पार्टनर्स का शुरू करेंगे सबसे पहले एब्सोल्यूट सरप्लस वी हैव टू पे. ओके, सो हियर सी बी का ए का है एब्सोल्यूट सरप्लस 5 lakhs. ठीक है. ए टू इज एब्सोल्यूट सरप्लस. पूरा 4 लाख पे कर लीजिए. तो कितना है यहाँ? ए का एल का है नॉट ए. एल का एब्सोल्यूट सरप्लस 4 लाख हम पे करेंगे. एल यहाँ 4 लाख पे कर लीजिए इनका. ये 4 लाख पेमेंट हो गया. तो लेफ्ट आउट कितना है? नील हो गया. इनका एब्सोल्यूट सरप्लस कितना था? 5 लाख था. अभी 4 लाख पे कर लिया है. 5 लाख पे 5 लाख इनका एब्सोल्यूट सरप्लस था, उसमें 4 लाख पे कर लिया है.
अभी बच गया है 1 लाख एब्सोल्यूट सरप्लस। ठीक है, 4 लाख पे हो चुका है। राइट, नेक्स्ट रियलाइजेशन क्या है? बैलेंस ब्रॉट डाउन। एल का है 15 लाख में 4 लाख दे दिया है, बाकी है इनका 11 लाख। सो अभी क्या है, थर्ड रियलाइजेशन तक हम कितना, सेकंड रियलाइजेशन हो गया, थर्ड रियलाइजेशन। थर्ड रियलाइजेशन how much is the third realization? This is also 15 lakhs amount realized, 15 lakhs। तो सरप्लस कितना बच गया अभी? सरप्लस 1 लाख, एब्सोल्यूट सरप्लस 1 लाख है। पेड एल्स एब्सोल्यूट सरप्लस 1 लाख, एल को एब्सोल्यूट सरप्लस को पे कर लीजिए। ओके, राइट, पेड। नाउ बैलेंस लेफ्ट आउट इज हाउ मच? बैलेंस यू हैव 14 lakhs। तो किसको पे करेंगे? सो हियर इसके बाद ये 5 lakhs पेमेंट हो चुका है, अभी दिस 5 lakhs ये दोनों का बाकी है। एल एंड एम दोनों का एब्सोल्यूट सरप्लस, मतलब एल का एब्सोल्यूट सरप्लस हो गया है। अभी सरप्लस बिटवीन ए एल एंड एम कितना है? सरप्लस बिटवीन एल एंड एम कितना है? ये है 5 लाख है। अभी ये 5 लाख पे करना, हम एब्सोल्यूट सरप्लस 5 लाख एल को पे कर लिया है। अभी सरप्लस बिटवीन एल एंड एम 5 lakhs है, ये इसको हम सबसे पहले पे करना है। सो this is 14 lakhs into surplus of L and M। 5 lakhs दोनों को पे करना है, तो 10 लाख है, हम पे करेंगे इनको 10 लाख, 5 लाख, एंड इनको 5 लाख। अभी देख लीजिए सारे सरप्लस पे हो चुका है, सारे सरप्लस पे हो चुका है। एब्सोल्यूट सरप्लस भी पेमेंट हो चुका है, और देन द सरप्लस आल्सो पेड। So balance is how much? Balance here is 14 lakhs minus 4 lakhs. इनका बैलेंस कितना है? 15 lakhs से 11 lakhs minus 6 lakhs, ये तो हो गया 5 lakhs। 10 lakhs minus 5 lakhs, 5 lakhs। And how much is S capital? 5 lakhs। अभी देख लीजिए सरप्लस पे करने के बाद व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका 1:1:1 है। सो सरप्लस पे करने के बाद अभी इनका कैपिटल हो गया है इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1। अभी से हम सबको बांटेंगे, वॉट एवर द बैलेंस इज देयर दैट वी विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो कैपिटल, पेड टू कैपिटल एट 1:1:1। तो कितना हो जाएगा ये? 1 लाख, 1,33,333, 1,33,333, एंड यहाँ 1,33,334, टोटल 4 लाख हो गया, 4 lakhs। So here the balance will be there. So balance
3,66,667. 366,667. This is also 366,666. Okay, it हो गया. Now up to third realization we have done. Fourth realization. How is the fourth realization? Amount realized. Amount realized fourth realization is 30 lakhs. ये टोटल कितना है? टोटल इज अभी आपको आ गया है टोटल 11,000 आ गया है. 11,000 is the total capital. Before fourth realization. ये करने की जरूरत नहीं, right? Before fourth realization, total capital कितना है? Total capital is 11 lakhs. Amount realized कितना मिला है? 30 lakhs. Profit after fourth realization is 19 lakhs. ठीक है, तो ये 19 lakhs को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स को. ठीक है, राइट. प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड. तो ये कितना है? 19 lakhs है. 19 lakhs in the ratio 1:1:1. How much will be the profit? Divided by 3. ये हो गया है 6,33,333. ये हो गया 6,33,333. 6,33,333 and 6,33,333. ये हो गया. So this is profit after ये टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 10 lakhs, 10 lakhs, 10 lakhs. Fourth realization amount 10 lakhs. Paid to partners 10 lakhs. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे कर लीजिए. तो 10 lakhs 10 lakhs इसको आ जाएगा 10 lakhs. इनको भी आ जाएगा. Okay.
So fourth realization is over. Let us go for the fifth realization. Balance यहाँ. So आपको प्रॉफिट कितना है यहाँ? ये प्रॉफिट आया है आपका, तो प्रॉफिट को हम इंक्लूड कर लिया है, राइट. फिफ्थ रियलाइजेशन. प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन कितना है यहाँ? यू आर गेटिंग फिफ्थ रियलाइजेशन 30 lakhs. प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 30 lakhs. तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए पार्टनर्स को. सो सबको मिलेगा 10 lakhs ईच. 10 lakhs, 10 lakhs. तो ये हो गया है 10 lakhs. तो सॉरी, ये तो प्रॉफिट है. ये तो प्रॉफिट है, नॉट द पेमेंट ओनली टू बी सब्ट्रैक्टेड. ये प्रॉफिट है. ठीक है. Okay. So profit 10 lakhs, 10 lakhs, 10 lakhs. ये हो गया प्रॉफिट. देन अमाउंट रियलाइज कितना है? अमाउंट रियलाइज्ड रुपीज 30 lakhs. Paid to partners 30 lakhs. तो हम पे करेंगे सबको 10 lakhs. सबको 10 lakhs पे किए. तो बच गया कितना? बैलेंस कुछ नहीं. तो ये है, ये भी प्रॉफिट है. ठीक है. तो हमारा कितना प्रॉफिट आया है? प्रॉफिट है 63333. देन फोर्थ रियलाइजेशन पे आपको आया था 6333 एंड फिफ्थ रियलाइजेशन पे ये है. सो टोटल प्रॉफिट realization profit. This is A. So this is A plus B. 16,66667. 16,66,667 and नहीं, 16,33,000. 16,33,333. 16,33,333. 16,33,334. So this is the overall profit आपको मिल रहा है. So this is the way we have to do the piecemeal distribution. थोड़ा लंबा होता है. What is 49 lakhs? How 49 lakhs? So your profit is coming only after
The profit is from the fourth realization. So, total will be here also that 19 lakhs and here 10 lakhs, 10 lakhs. If you total this will be 49 lakhs. Yes, this is rupees 49 lakhs is the overall profit. Okay. So this is the way we have to do it. कभी किया है इसका पहले? कभी किया है इसका पहले? Any one of you? Because when I asked you, no one has said, yes, sir, I know about it. Okay, anyhow. So this is Kunsa method. This is absolute surplus method. Yeah, higher relative capital method. So सबसे पहले we have to find out what is the absolute profit कितना है, ये find out करना है. उसके बाद statement of distribution करना है. The distribution सबसे पहले we will be providing for realization expenses. यहाँ किया है. Realization expenses को हम यहाँ provide किया है. Realization expenses this amount. So we have provided this. ये तो किया था. Realization expenses. Then ये है realization expenses को provide किया था. Then हमारा पास जो balance बच गया था 1 lakh. That 1 lakh we have to give to the secured loan. So secured loan is the bank loan. So हम 1 लाख पे कर लिया. उसके बाद बच गया है 4 लाख. So first realization we got 5 lakhs. 4 lakhs secured loan के लिए पे किया. Balance 1 lakh cash था. That we have paid to the unsecured creditors. 1 lakh पे कर लिया. Total unsecured creditors are 2 lakhs. We have paid 1 lakh. The balance left out is unsecured creditors 1 lakh. Second realization 15 लाख मिला था तो unsecured creditors पे कर लिया. Balance आपका पास cash balance है 14 lakhs. So in the 14 lakhs we have to pay after settling the unsecured creditors. We have to settle partners loan. So partners loan के लिए ये 10 लाख हम पे किया है. Paid to creditors, paid to partners loan 10 lakhs we have paid. The partners loan we have paid it. So ये partners loan pay करने के बाद भी आपका पास बच गया था 4 लाख. Cash left out was 4 lakhs. So now this is to be distributed to the partners. So we have gone for the absolute surplus. Absolute surplus here for L we have to pay 5 lakhs. He has paid absolute surplus of 5 lakhs more than he is supposed to pay. तो हमारे पास बच गया था. कितना बच गया? हमारे पास बच गया था here 4 lakhs was left out. So this 4 lakhs absolute surplus we have to pay to. किसका पे किया था? एल को पे किया था. एल का बैलेंस हो गया 11 लाख. बाकी लोगों का 10 लाख और 5 लाख था. थर्ड रियलाइजेशन. So third realization. तो एल का जो सरप्लस है वो तो 1 लाख पे किया है. फिर भी बच गया 14 लाख. तो उसमें सरप्लस ऑफ ये है सरप्लस. द सरप्लस ऑफ L&M. This surplus we have paid it. ये है सरप्लस 5 लाख है. तो इसको पे किया था 10 लाख हो गया था. ये 10 लाख पे करने के बाद still you are left out with 4 lakhs. These 4 lakhs we have to distribute to all partners. यहीं से all partners we have to distribute in the profit sharing ratio. This 4 lakhs was distributed to the partners in the profit sharing ratio 1:1:1. तो इनका बैलेंस आ गया है 3,66,667 चारों का, तीनों का. देन फोर्थ रियलाइजेशन का पहले तो ये बैलेंस ये था. प्रॉफिट हमारा फोर्थ रियलाइजेशन पे कितना था? we had the profit of 19 lakhs. So हमारा नहीं प्रॉफिट कितना था? फोर्थ रियलाइजेशन 10 lakhs होता है. तो 10 lakhs को हम 10 lakhs हम पेमेंट कर चुका था. हाँ, ये दोनों मिला के टोटल आ गया था इतना. सो वी हैव पेड द 10 lakhs को पे कर दिया है.
Fourth realization is 30 lakhs, not 10 lakhs. Fourth realization was 30 lakhs. Fourth realization was 30 lakhs. So we have paid 30 lakhs. These 30 lakhs we have paid to the partners in the profit sharing ratio 10 lakhs, 10 lakhs, 10 lakhs. उसके बाद बैलेंस नील हो चुका था. देन फिफ्थ रियलाइजेशन हमको मिला है 30 लाख. ये पूरा का पूरा प्रॉफिट है क्योंकि कैपिटल इज ऑलरेडी पेड. So we have distributed the 30 lakhs profit, 10 lakhs, 10 lakhs, 10 lakhs. Then 10 lakhs, 10 lakhs, 10 lakhs. तो हमारा पास 30 lakhs मिला है. तो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था और उनका बैलेंस फाइनली नील हो गया था. So overall profit will be A plus B था. So ये प्रॉफिट हो गया 49 lakhs. फाइनली वी गॉट द प्रॉफिट. थोड़ा लंबा सा होता है लेकिन easy to do. अगर आपको कैसे हम एब्सोल्यूट सरप्लस फाइंड आउट करना, उसके बाद तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. सिंपल है. आर यू गेटिंग दिस? आर यू गेटिंग दिस? एनी डाउट फॉर एनीवन? एनी डाउट फॉर एनीवन? कोई किसी का डाउट? सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग द लॉस ऑफ प्रॉफिट. ऑलरेडी हमारा टाइम अभी अब हो चुका है. So next class we'll be doing loss of profit. Before that, I have already told you to everyone. पहले क्लास का पहले जो ज्वाइन नहीं किया था, I said I will conduct the separate class for the accounting standard from my side, not from the institute side, because institute class won't be sufficient to complete the course. I'll be conducting from my side. Private class I will give you free of cost. You can attend as a guest. तो जो ज्वाइन करना चाहता है, बट कम से कम तो 6-7 लोग होना चाहिए, तब मैं कंडक्ट करूंगा क्लास, सेपरेट क्लास. आई विल गिव यू. सो हुअर वांट्स टू ज्वाइन प्लीज काइंडली सेंड मी द रिक्वेस्ट. एंड यहाँ तो मैं किसको बताया था, who was said, तो आई थिंक आई टोल्ड either आई डोंट रिमेम्बर किसको मैं बताया था कोऑर्डिनेट करने के लिए. किसको बताया था कोऑर्डिनेट करने के लिए? To whom I have asked to be as a coordinator? I think I have requested